Hello to everyone who are watching my video, and this is a video for the students of class 11th biology, and the topic is from the chapter 3. Okay, so in this chapter we will study about the bryophytes. In the previous video I have covered the topic algae, different classes of the algae like chlorophyceae, phaeophyceae and the rhodophyceae. So just uh, next group is bryophytes. So begin with this. Let's see what is there. See, we'll begin with the general characteristics. एक बात ध्यान में बैठा लें कि ब्रायोफाइट्स हम जब कहते हैं तो ये ट्रू मीन्स इनके पास ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स एंड ट्रू स्टेम नहीं होता है. ओके, ट्रू ये सब नहीं हुआ करता है, राइट. बट दे लुक लाइक द स्मॉल प्लांट, ये छोटे से प्लांट के जैसे दिखा करते हैं. सो दे आर नॉन वेस्कुलर मॉसेस एंड लेयरवर्ड्स एंड दे ऑलवेज ग्रो इन द मॉइस्ट प्लेसेस. ओके, शेडी रीजन्स, मॉइस्ट प्लेसेस वहाँ ग्रो करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. वाई एम्फीबियंस, क्यों ऐसा हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में कि दे आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? बिकॉज these plants live on soil but dependent on water for sexual reproduction. Means process of fertilization cannot be accomplished without water, and that's why they are the amphibians. Okay, so generally we found them growing in rainy season on walls, rocks, on damp soil, etc. नाउ इन द ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज, हमेशा लाइफ में दो में से एक फेज जो है वो डोमिनेंट होगी. ठीक है, जब हम डोमिनेंट फेज बता रहे हैं मीन्स वो ज़्यादा समय के लिए रहती है. तो इसमें जो प्लांट बॉडी है इसमें डोमिनेटिंग फेज जो है गैमेटोफाइट है. गैमेटोफाइट मीन्स एन, एन. ओके, haploid, easy words. So they don't have roots, but in place of the roots they have the rhizoids which will draw the nourishment from the soil. Okay, so they have leaf like structure but not true leaves. They have stem like structure but not the stem, may not be. Okay, we will study the, हम इसके दो अलग groups पढ़ेंगे, liverworts and the mosses, right. सो जनरल इन यदि हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, गैमी, बर्ड्स. ओके, एंड सेक्स ऑर्गन्स दे आर multicellular and jacketed. Okay, male sex organ it is called as the antheridium. Okay, and antheridium further produces the biflagellate anthrazoid. Means anthrazoid is a gamete, male gamete, and female sex organs is called as the archegonium, which is a flask shaped and it produces single egg, right. So means जब ये ग्रो करेंगे, स्पोर्स जनरेट होंगे तो नेक्स्ट गैमेटोफाइट का बाद का स्टेज जो होगा वो स्पोरोफाइट होगा. तो जो स्पोरोफाइट बनता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर नरिशमेंट के लिए. हम इनके दो ग्रुप्स की बात करते हैं, लिवरवर्ट्स. ओके, सो व्हेन वी से लिवरवर्ट्स तो द प्लांट बॉडी ऑफ इट इज लिवरवर्ट्स आर थैलॉइड वन. We have the example of Rixia, Markensia. This is so their thallus is dorsiventral. Dorsiventral means grow like that, the dorsal surface and the ventral surface, and it is very close to the substratum. मतलब जमीन के बहुत करीब होंगे, जहाँ भी वो ग्रो कर रहे होंगे substratum वहाँ बहुत करीब होंगे. And if we talk of asexual reproduction in liverworts, so that takes place by fragmentation, by the formation of gamete, which is a specialized structure. तो इसके से हुआ करता है. And gamete, what is gamete? If we have a question, so gamete are green, multicellular, they are buds, okay, which develops in small receptacles called gamma cups. Gamma cups में gamete develop हुआ करते हैं. Okay, and gamete becomes detached from the parent body and it forms the new individual. Okay, during sexual reproduction, if we talk of, so male and female sex organs, they are produced. It may be on the same thallus they are growing, okay, or it may be in the different thallus. Okay, this is possible. So we will see in the pics in the next slide. So what happens? Sexual reproduction, male and female sex organs, they are produced either on the same or on different thalli, and the sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule.
मतलब स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स हुआ करते हैं. ओके, फ्रॉम बॉटम फुट, देन सीटा स्टॉक लाइक एंड कैप्सूल एट द top, and then the spores are produced, which are wherever they fall down, they give rise to gametophyte. So here in this slide you can see Markensia. इसमें दोनों थैलस, मेल एंड फीमेल थैलस अलग अलग है. ओके, दिस यू कैन सी एंथ्रीडियोफोर, ये मेल है. ओके, एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, इस तरीके से ये मतलब ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग थैलस पे डेवलप हुए हैं. मॉसेस, लिवर वर्ड्स तो एक दूसरी एक कैटेगरी हो गई. अब मॉसेस, मॉसेस जो हुआ करते हैं वो प्लांट लाइक, बिल्कुल छोटे से प्लांट लाइक हुआ करते हैं. तो इट्स गैमेटोफाइट मीन्स डोमिनेटिंग फेज इज द गैमेटोफाइट, एज लाइक इन द मीन्स जैसा कि ब्रायोफाइट्स में होता ही है. ओके, इट कंसिस्टिंग ऑफ 2 stages. The first stage is called as protonema stage, and which directly develops from the spores. So it is a creeping green and filamentous one. Okay, or when we talk of the second stage, so it is a leafy stage, and which develops from the secondary protonema as lateral buds, and it is upright. ये upright होता है, राइट. और इसमें जो लीव्स लगी होती है वो स्पाइरल लगी हुआ करती है, स्पाइरली अरेंज होती है. दे आर नॉट द ट्रू लीव्स. ओके, दे आर लीव्स लाइक, बट दे आर नॉट द true leaves. And vegetative reproduction, it occurs by the fragmentation or by the budding. And sexual reproduction, the same is antheridia and archegonia. They are produced in the apex of the leafy shoots, जहाँ लगे हुए हैं leaves, वहाँ पे ये develop हुआ करते हैं. And sporophyte in mosses, that is more developed. Okay, and it consists of foot, seta and capsule. So we have the example of mosses as Funaria, Polytotrichum, Sphagnum. These are. So you can see this in next slide. This you can see, this is Funaria. उसमें कैप्सूल की तरह हैंगिंग वो कैप्सूल दिख रहा है. फिर एक स्टॉक लाइक है जो फिलामेंटस है, दैट इज सीटा, और बॉटम पे उस पे दिख रहे हैं लीफ लाइक, इस बहुत सारी लीफी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. ओके, तो ये फ्यूनेरिया है, तो वो लीफी लाइक है बॉटम पे. थैंक यू.